Hi guys, welcome back to the live stream. I hope you guys are doing good. Just let me know if you guys can hear my voice. I think there's some kind of network error in my. Alright. Okay, so let's start with the announcing and Euro USD. So basically, let's see from the daily time frame what's happening. I'm in the cells right now. So wait. Okay. So, see, after the yesterday's big liquidity sweep, we were planning to go in the sell direction. And if you are a swing trader, then again, the bias is always the on the selling side because again, if you see that we cleared the day before yesterday, we cleared the liquidity of the 11th December. But today, the day before the yesterday's candle sweep the liquidity of this area as well. That was the 2nd October scandal, right? Volume is low. Is it like that? Wait. Hello, hello, hello. Can you hear now? Let me know if it's still low. Hello, hello. I think it's full. My volume of my mic is full. Yes, now better. Okay, perfect. All right. So, okay, cool. So, on the daily time frame, हमने देखा there was a liquidity sweep. So, we were planning for the sell side today, as usual, क्योंकि इसने हमारी liquidity देखो आप इसकी 1st October की liquidity भी grab कर ली थी, right? So that was the one of the point that we were in the sell position today. And let's come on to the 4 hour time frame. I don't know what's happening with my network today. It's very weak. Okay, so we are making the fair value gaps on the daily on the 4 hour time frame as well. अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है हमारा premium area. When there is a fair value gap that is formed in the premium area, that is considered one of the major zones. तो यहाँ पर हमारा premium area था. I don't know what's happening with my network today. Okay, so this was the premium area right now. हमारा यहाँ पे हमारा फेयर वाले गैप था तो दिस इज द मेजर वन ऑफ द मेजर फेयर वाले गैप्स दैट इज फॉर्म्ड सो अभी यहाँ पे हम 1 आवर पे देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम भी हमारा स्ट्रक्चर जो है पूरा बेयरिश साइड पे है बट वन ऑफ द कॉन्फिडेंस इज दैट आई माइट बी कि हमारा थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट और देन वी गेट द गुड मूव डाउन साइड ओके तो हमारा अगर हम 1 आवर पे देख रहे थे कि 1 आवर पे हमारी प्रीवियस जो कैंडल थी हमारी प्रीवियस कैंडल थी दैट वाज 11:30 की कैंडल वो भी उसने ब्रेक कर दी 12:30 ने राइट एंड हमारा जो यहाँ पर एशिया जोन था एशिया का लो था उसको लो को ब्रेक कर कर क्लोज हुई है जब लो एशिया का लो था उसको लो को ब्रेक कर कर क्लोज हुई है जब लो को ब्रेक कर कर क्लोज होती है दैट इज नॉट कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप आई डोंट कंसिडर दैट एज अ लिक्विडिटी स्वीप तो हमने यहीं पर आए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमने देखा अगेन यू कम ऑन 5 मिनट्स तो देखो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मेरी एंट्री यहाँ पर होनी थी बट थोड़ा सा लेट मैंने एंटर दिया यहाँ पर हियर तो हियर शुड बी माय एंट्री यहाँ पे फिर लगा पे आई जस्ट एंटर्ड माय ट्रेड दैट वाज द सिंपल सेटअप दैट आई टुक बट अगेन लेट्स सी बिकॉज आई जस्ट बिलीव स्ट्रांगली बिलीव इन द प्रोबेबिलिटीज अगर आप देखो कि कल का जो हमारा ट्रेड था लेट मी एक्सप्लेन यू यस्टरडेज ट्रेड इफ एनीबडी कैप्चर आई डोंट नो ये था तो हमारा ट्रेड कल का
I don't know what's हाँ, ये था ना हमारा ट्रेड कल का। तो हमारा हमने यहाँ पर हमारा सेटअप बन रहा था, चाहे न्यूज़ थी, आई डोंट केयर इफ इट्स एनएफपी सीपीआई, आई डोंट केयर। हमारा सेटअप यहाँ पे बना, वी टेक द ट्रेड राइट ओवर हियर, स्टॉप लॉस यहाँ पर आया, फुल टीपी 20 पिप्स। सो एवरेज मूवमेंट हमें अपनी, अगर हम एवरेज मूवमेंट करें उसकी, अंडरस्टैंड करें यूरो की क्या है, तो हमारा लंदन, प्री लंदन किल जोन में इट्स अ हाई प्रॉफिट है। तो अगर 1 आवर की क्लोजिंग हो जाती है ना, तो 1 आवर की क्लोजिंग पे माइट बी कि थोड़ा सा ऐसे कर कर आए एंड देन वी कैन कम डाउन, इट्स अ प्रोबेबिलिटी लाइक दैट ऑल्सो। हाँ, काफी बेरिश हो चुका है ऑलरेडी, दैट यू आर करेक्ट। बट अगेन इफ यू गेट द वन रेशो वन इवन, तो हम ब्रेक इवन पे कर लेंगे, दे वुड बी रिस्क फ्री देन ऑलमोस्ट। आज आई वाज नॉट सपोज टू टेक अ ट्रेड टुडे बिकॉज अगेन हमारा काफी लाइक विनिंग स्ट्रीक चल रहा था यूरो यूएसडी में। सो लाइक ओके, बट देन आई जस्ट टुक द ट्रेड। येस्टरडे कल क्या हुआ मेरे साथ, मैंने अपने फंडेड अकाउंट में ट्रेड लगाई एंड आई जस्ट फॉरगॉट कि मेरी ट्रेड लगी हुई है। इट गेव द टीपी, मैंने टीपी नहीं लगा रखा था एक्चुअली उसमें, टीपी आया एंड देन उसमें सीधा ऐसे नेट हो गया। But that is the point when you have to manage two, three accounts. Now I'm thinking just to manage one account fully because it's very difficult to manage three, four accounts at the same time. तो हमारा परसों का ट्रेड, मंडे का ट्रेड भी बहुत सही गया था, यहाँ पे आया टीपी, फुल टीपी था। एंड द गुड पार्ट इज, यू नो व्हाट, इट डजंट गिव एनी ड्रॉ डाउन व्हेन यू फील लाइक द यूरोएसडी। जो ट्रेड ली थी, यहाँ पे ली थी, इसमें थोड़ा सा हमारा फिल हो गया था, राइट, दिस वन 255। हाँ, इसमें हमारा फिर वाले का फिल हो गया था, but again we sustained in this trade. बट मोस्ट प्रॉब्ली there's a हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारा फिर वाले का फिल नहीं होता है इसमें। एंड ऑल्सो वन थिंग कि अगर तुम लोग यूनिवर्सिटी कर रहे हो तो उसमें स्टिक रहो, जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है ना उस पे ही स्टिक रहो, डोंट चेंज या फिर कोई भी उस पर ट्वीक मत लो। बिकॉज क्या होता है कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटीज कम हो जाती हैं उसके हिसाब से। जैसे कि मैंने कल परसों ट्रेड नहीं ली, दो दो दिन ट्रेड नहीं ली, तो मुझे लगता है मेरी आज की प्रोबेबिलिटी कम है ऑफ द विनिंग। सो आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन दैट ऑल्सो, कि अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो तो उसे रोज करो फिर। तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखोगे तो तभी हमें रिजल्ट्स कुछ दिखेंगे। अगेन इफ अगर तुम लोग काफ़ी टाइम से मेरी स्ट्रीम्स ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हें तब पता लगेगा कि हाँ हमारा पेंडेंट कितना है, कि हम लोग रोज ट्रेड ले रहे हैं। अगर तुम बीच में आओगे, बीच में नहीं आओगे, तो फिर वो तुम्हें एक प्रोबेबिलिटी नहीं पता लग पाएगी कि स्ट्रैटेजी की कितनी प्रोबेबिलिटी है, फिर वो रैंडमली ट्रेडिंग हो जाएगा। इज देयर अ चांस यू कुड यूज इंग्लिश मोर ऑफन? या ऑफ कोर्स, आई मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीक इन इंग्लिश। If you see my streams, mostly I speak in English. So this is from my side. If you think, wait for the pullback and then you guys can enter. Again, let's see what happens today. Just 10 minutes left to the closing of this fair valega. So let's then see. Again, we are a bit of overly extended in euro on the smaller time frame. As we see on the daily time frame, is still a lot to go down right now. See, what from which point of interest we are getting the rejections. If you see on the daily time frame, we see this this fair value gap, this one. I marked yesterday also this fair value gap, but this is the major one of the major zones. And from here we are getting a good, rejection right now, or maybe consolidation you can say. But I feel what I feel, if we can get the closure today below this fair value gap, again we are good to go more down. अभी तक रिट्रेसमेंट कहाँ तक है यूरो में? Let's see what happens with euro is euro doesn't, most of the time doesn't give a chance to retrace sometimes, and it directly moves down. So that's why I was not waiting for the retracement today. See, let's
or 4 hour. See, on the 4 hour time frame, according to the 4 hour time frame, right? If we, on the according to the higher time frame, it can go to 30 or 50, even 61%, right? But according to the daily time frame, see, मुझे नहीं लगता कि a bit we can get retracement. Why? Because see, it has to close below the fair value gap right over here in order to give the bearish moment. So that's why I was not waiting for any retracement today. Why? Because see, if you wanna wait for the retracement, then again, we will be not able to catch the move that we want. But again, see, 1 hour time frame pe, you can expect ki half of this fair value gap you can get some right over here, or maybe this fair value gap right over here, this one till here, or it's possible that we just fill the half of this fair value gap. See again, because तुम्हें मैं यहाँ दिखाती हूँ on the this one, अब तुम्हें दिखेगा. So delete कर देती हूँ. Okay, so most of the time what happens, अभी हम 1 hour पे we are forming the fair value gap. So if it taps the fair value gap, half of the fair value gap, I'm good. Then we can go again down. So that's what I'm thinking right now. But there is a chance that we can this trade might not be playing that good, because again we have a lot of imbalance downside. But according to 1 hour time frame, so I feel like we can go down. So let's see what happens. Just follow the rules to the setup. That's all we want. Did you guys capture yesterday's trade? Hey, where is your Discord link? Wait, let me show you my Discord link in a moment. Copy. Liquidity sessions, HR sessions like that. Liquidity grabs, etc. Hi, hey, hello Nitin, how are you? आप किस किस ब्रोकर का यूज करते हो? I use A markets and I also use Vantage plus E markets. See, yesterday what I was saying you, that the concept of the mark, what does news do? News take out the liquidity of all the sessions. See, if news has to come, you have to know your levels. Yeah, there's a kind of probability that news will play out or not play out, right, in a certain direction. But there is also a probability that news will take out the liquidities of the marked zone. Okay, so if your trade says that the your liquidity is lying upside, and the news also comes, so it will take the liquidity of the upside. So that's yesterday also key. It went up and then we came whole the way down. um but now it's a very good confirmation on the daily time frame that we might go all the way down because of yesterday. From the yesterday's candle, see this one, it took the liquidity of the 1st of October even. So I just want this candle closure, today's candle closure, to be like closing below this range. So then we are more of confirmed. Today I went to capture USD JPY but did not retest my level of 155.00. So hard to leave the trade now. That is flying. Okay, you missed your entry. I think yeah, you shared in the group as well, right?
worries. It's okay if you did not get any entry. Do we have any kind of news? Let me see if that's why it's consolidating. Is there is the RR you following is 1:1? No, it's 1 in the chart. Yes. Somebody, I think somebody has already pasted the Discord link in the chat. Wait, I'll share you. Maybe if it's not clickable, invite this. Okay. I shared you. If it's okay. All right. Bit of Nasdaq, like how it's behaving because of 24 hours in that. Hello, hello, hello. But it's quite wrong over there. I can't hear your voice if you're in the Discord, Nathan.